Hello, welcome students. You are watching a physics class on chapter 7, electricity and magnetism. So first of all, I want to introduce on electricity. So what is electricity? So we can say that electricity it is a form of what? Energy. Okay. So it is energy in a very convenient form that it can be traveled over a long distance. How? Through cable, through wire. Okay, almost instantaneously. So you know very well that we use electricity in our daily life. For what purpose? For lighting, heating, and running machine, and more domestic purposes or industrial purposes. Okay, so you must keep in mind that when an electric current passes through uh, a wire, then a magnetic effect is produced. Okay, so magnets and electromagnets also play an important role in the appliances and gadgets that we use. So in this chapter we have to study about the electricity and magnetism. Okay, so first of all let us discuss on electricity. So electricity is of two types, namely static and current electricity. So what do you mean by static electricity? Static electricity means the charges which is at rest, which is not in motion. Okay, so in this case we call it what? Such type of electricity is said to be static electricity. Suppose if you combing your hair, then what will happen? Then it will become electrically charged, and when you bring it close to the small, teeny bits of paper, then what will happen? Then it will attract the teeny bits of paper towards itself. So this means that this effect is due to static electricity. Okay, but in this case, the charges on the comb do not flow. This means that the charges inside the comb is at rest. Okay, so therefore we can check type of electricity is called what? Static electricity. So next is the electricity that is used in appliances is the current electricity, because here the electron move through a wire, it flows through a wire. Okay, just as the water flows through a pipe, जिस तरह से पानी पाइप के अंदर में फ्लो करती है, ठीक उसी तरह वायर के अंदर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो फिर हम बात करेंगे कि ये जो करंट है, तो करंट के जो होते हैं तो ठीक एग्जैक्टली पानी की तरह ही यानी कि फ्लो करते हैं. तो नाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड करंट. तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो? मैं क्या बोलूँगा? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए वायर. मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इट इज द फ्लो ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए मटेरियल. तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक चार्जेस. व्हाट आर द? पॉजिटिव एंड नेगेटिव. So in metals, you must be keep in mind that electricity is due to the flow of electrons, which are the carrier of negative charge. So you must keep in mind that electrons are the negative charge. Okay, so electron flow from higher region to a lower region. Okay, it flow from higher potential to lower potential. Okay, so now और टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम. जब तक ये दोनों बराबर में नहीं आ जाते हैं तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती रहती है. नाउ द क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्पियर. सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम. अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात कहूँ तो फिर मैं क्या कहूँगा? एम्पियर कहूँगा. तो अब इसका जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो चार्ज को हम बोलेंगे N इंटू ई. N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E हो गया चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. ओके, तो दैट विल बी डिस्कस इन द हायर क्लासेस. ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है? कूलम है. तो इफ क्वेश्चन अराइज व्हाट डू यू मीन स्टेट 1 कूलम, डिफाइन 1 कूलम, तो हम क्या कहेंगे? 1 कूलम इट इज अ वेरी लार्ज अमाउंट दैट कंपेयर टू द चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 कूलम. ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट. इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू a wire in a given unit of time.
तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, इसका यूनिट क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। और इसका जो फार्मूला करंट निकालने का वो है I इक्वल टू Q बाई टी, I इक्वल टू Q बाई टी। ओके, तो इसका यूनिट क्या कहा मैंने, एम्पियर। कैसे बना, तो I इक्वल टू Q बाई टी, तो T हो गया टाइम, Q हो गया चार्ज का यूनिट क्या है कूलम, और टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। ओके, तो फिर क्या बनेगा कूलम पर सेकंड। ये जो कूलम पर सेकंड जो बना इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एम्पियर कहेंगे। ओके, तो अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो हाउ कैन वी डिफाइन, मैं कहूँगा वी कैन when 1 coulomb of charge passes through a wire or a point in 1 second, then its current is said to be in 1 ampere. ओके, तब हम करंट को क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। तो अब सवाल ये खड़ा रहा कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें करंट कहाँ से मिलती है। मैं क्या कहूँगा कि करंट हमें क्या कहें, पावर स्टेशन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, एटॉमिक एनर्जी से भी हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेक्स चार्जेस वर मूव। तो इसमें क्या क्या आ गए, मैं कहूँगा प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो ये हम प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लास पसंद आ गया होगा। तो अगली बार फिर हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।